Hello students, hope you're having an amazing day. This is Shravan sir. Now I'm going to teach you the second chapter of 10th class science book, and that makes the chemistry part. Of course, I am your chemistry teacher, so I'll be teaching you the chemistry part only. So the second chapter, which is acids, bases and salts. So I'll be using both English and Odia because this is for students of my school, Odisha Adarsha Vidyalaya, because we teach in these two languages. We use two languages, that's why I'll be using English as well as Odia. So in our daily lives, we come across so many substances, whether edible or not edible. Edible means the substances which you can eat, and not edible, I use the word for substances that you cannot eat them. So there are so many substances which can be classified into three major categories, that are acids, bases and salts. So we'll be studying more about these three kinds of substances and what are these substances. First of all, their definitions, how to identify them, and what are their properties. Properties means basically their chemical properties. So chemical properties will include their reactions with other substances. So let us go through them one by one. So the chapter name is acids, bases and salts. So acids are the substances. Usually these substances are sour in taste. Sour in taste means आमे ताकू चाखिले सेटा खट्टा लागुथबो. एसिड होची सेही सब्सटेंस जाकू टेस्ट करले चाखिले सेटा खट्टा लागे. So they are sour in taste. First of all, acid, sour in taste. Second, the turn blue litmus paper, blue litmus paper to red. Third one is they corrode metals, and fourth one is they produce H plus ions. This is important, so keep in mind H plus ions in aqueous solution. One by one we will discuss these 4 points. First of all, I have already told you that they are sour in taste. Sour in taste means चाखिले सेमानकु सेमाने खट्टा लागिबे generally acid. Next, blue litmus paper, ताकु जदि एसिड देहरे बोडा जाए ताहले ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर को चेंज हो. सो एसिड टा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर को चेंज करे. दे कोरोड मेटल्स, मेटल को से माने खाई जानती, नष्ट कर दियंती. जेमिति कि लोहाटा कलंकी लागि गले से नष्ट हो जाय, सेमिति मेटल मान को एसिड देहरे जदि पकेबा ताहले मेटल यूजुअली कोरोड हो जाए. स्लोली बड़े बड़े फास्ट भी हुए. नेक्स्ट, they produce H plus ions in aqueous solution. This is the important thing that you have to remember. Chemical reactions जो acid रो पढ़िबा सेइथरे ए जो H plus ion ये produce करे एटा basically आरो characteristic property determine करिवो. acid रो characteristic property पय दायी हबो ए जो H plus ion. ये जो aqueous solution रे, aqueous solution कहले कोन, पानी रे जो सॉल्यूशन हुए एसिड को जदी आमे पानी रे पकेबा ताको कहबा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड. सो जहां को भी आमे जदी पानी रे पकोचे त सेटा हेगला तारो एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इन वाटर. सो एसिड जनरली दी प्रकार रा थाय. गोटा हला स्ट्रांग एसिड आ गोटा हला वीक एसिड. स्ट्रांग एसिड आ गोटा हला वीक एसिड. वीक एसिड. Strong acid examples से गले हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे कोन से हाइड्रोजन हैलोजन रो एसिड हेगला सेटा स्ट्रांग एसिड. हाइड्रोआइडिक एसिड जेमति कि HI नला हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF.
HBr हो एमाने सब हेले स्ट्रांग एसिड्स सो हम पूरा लिखबेनी नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 this is the strongest known acid this is also called king of acids धीरे धीरे आमे अधिका मात्रा रे जानिबा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विषय नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3 सो हमको बेसिकली ए तीनटा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये तीनटा हमको इजीली लैबोरेटरी रे अवेलेबल होथबो सो विल बी taking these three acids to carry some chemical reactions or experiments सेमती weak acid रहे गले acetic acid CH3COOH which is found in vinegar you all know that is found in the kitchen vinegar so the vinegar is acetic acid next all organic acids like lactic acid which is present in curd oxalic acid which is present in tomatoes tartaric acid in tamarind these are all organic acids and they are all weak acids oxalic acid lactic acid etc and all organic acid these are all weak acids so weak acid हवा जो समान को हमें कंज्यूम करि परछे खाइ परछे जदी स्ट्रांग एसिड थी ना ताले तारो इफेक्ट बहुत स्ट्रांग स्किन रे पड़िले ही समान स्किन को ही खाइ जिवे so they are absolutely not edible so this is some initial or primary information about acids so how do we identify them by tasting they are sour in taste किंतु सब बेले आमे एसिड को चिन्हिबा पई ए जो चाखिबा बा टेस्ट करके आमे चिन्हिबानी बिकॉज़ दे कैन बी डेंजरस टू so that's why some other substances some other means are there using which we can identify whether it is an acid or a base or salt next bases are usually bitter in taste second they turn red litmus to blue third one is they are soapy to touch and fourth one is they produce OH minus ions in aqueous solution they are bitter in taste that means समान को जदि आमे टेस्ट करबा चाखिबा ताले सेटा पित्ता लागिवो एसिड हले से खटा लागुथला किंतु बेस हले से पित्ता लागिवो देन रेड लिटमस पेपर देहर जदि आमे बेस पकेबा बा बेस देहर आमे रेड लिटमस पेपर को बोडेबा ताले रेड लिटमस पेपर टा ब्लू कलर को चेंज हबो दे आर सॉपी टू टच साबुन पानी जेमिति बा साबुन को छेले जो फीलिंग हुए सेमिति फीलिंग हबो बेस को टच करले दे आर सॉपी टू टच एंड दे प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन aqueous सॉल्यूशन पानी रे पकेले बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करियो जेटो को हाइड्रोक्सिल आयन बोली कहा जाय हाइड्रोक्सिल आयन और समटाइम्स हाइड्रोक्साइड बोली भी कहा जाय को हाइड्रोक्सिल आयन और सिंपली हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन इतमें हाइड्रोक्साइड so the characteristic reaction of bases is completely dependent on this OH minus ion hydroxyl ion को depend करे आरो base रो सब जाक reaction समिति जमिति हमें acid देखले दी प्रकार रो strong acid आउ weak acid समिति base भी दी प्रकार अछि गोटे हला strong base and weak base strong base and weak base स्ट्रॉन्ग बेस जो माने आमे टिके अधिका क्लास को गले हायर क्लास रे माने स्ट्रॉन्ग बेस कोन तार डेफिनेशन केमिति ताकू माने डिटरमाइन करा जाए
सेटा सब जाक आम आउ टिके अधिका एलाबोरेटिवली पढ़ा किंतु एबे आम एतिकी जानिबा जे स्ट्रांग बेस माने जे मानकर इफेक्ट बेसिक इफेक्ट बहुत अधिका थाए स्किन रे पड़िले से माने स्किन को करोड कर देबे स्किन खाई जेबे जेमति कि मेटल रे पड़े मेटल को खाई जेबे से भला स्ट्रांग बेस आर बे इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहे जेमति कि सोडियम हाइड्रोक्साइड potassium hydroxide calcium hydroxide these are all strong bases weak base रे आसीबो ammonia तार derivatives जोटा कि ammonium hydroxide milk of magnesia जोटा magnesium hydroxide is also a weak base magnesium hydroxide sodium hydrogen carbonate NaCO3 देखो आमे बेकिंग सोडा बोली खोजे खाइबा सोडा ओडिया रे सो बेकिंग पाउडर जो तैयारी हुए से यार कंपोजिशन थाए NaCO3 मिस थाए तादरे सो ए माने हे सब वीक बेसिस सो दिस इज द प्राइमरी इनफॉरमेशन अबाउट बेसिस पर पर आम एसिड बेस को पढ़िला पर एमान प्रॉपर्टी पढ़िला पर आम लास्ट पार्ट रे सॉल्ट विषय आम जानिबा ए भितर ही जानिबा मान रिएक्शंस पढ़िला बेले भी आम जानि परबा कोन सब सॉल्ट सो आम एसिड आ बेस विषय किछि मात्रा रे आम परिचित अच्छे जमिति कि पेट एसिडिटी हो गला बोली कहूचे एसिडिटी जदि हो गला पेट ताहाले आम जेनराली कौन यूज करुचे ताकू ये करबा पे न्यूट्रलाइज करबा पे घर मानकर लेंबू पानी अच्छी आउ बेकिंग पाउडर अच्छी ना बेकिंग सोडा अच्छी ताले हमें कोटा यूज कले बेटर हम एसिड जदि पेट एसिडिटी हो जाए ऑब्वियसली आम बेकिंग सोडा चूज करिया बिकॉज बेकिंग सोडा होची गोटे बेस्ट कहीं ना एसिड आउ बेस एमाने परस्पर को कैंसल करते परस्पर इफेक्ट माने कैंसल करते दे नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर दे न्यूट्रलाइज ईच अदर दैट्स व्हाई वी चूज ए बेस व्हेन वी हैव एन एसिडिक स्टमक so how do we identify acids and bases in the beginning of this chapter I told you that acids are sour in taste and bitter bases are bitter in taste but it is not always safe or advisable to taste them to put them in your mouth because they can be very dangerous too so to identify acids and bases we are using certain indicators. So what are these indicators? Indicator means they will indicate whether it is an acid or a base. Generally indicators they change their color. The indicators that we use in the laboratory that indicate through color change and some indicators they change the smell also. These are called olfactory indicators. So the definition of indicator is the substance which impart different colors in acid and basic solution. Indicator होची गोटे substance जे कि acid आउ base रे भिन्न भिन्न color से सूचेइबो so that आमे चिन्हि परिबा जे एटा acid की base. So let us learn something about indicators. Indicators. So what are indicators? Indicators are the substances that impart different color. Sometimes आमे देखिबा जो smell कोचे ताकू कहे olfactory indicator so they can impart smell also. So different color or smell sometimes in acid or acidic and basic solution or medium also you can write solution or medium. Basic medium रे गोटे कलर देखला बेल को acidic medium रे आउ गोटे कलर से देखौथबो अरे basic medium रे गोटे स्मेल हला बेल को acidic medium रे आउ टिके अलगा प्रकार रो स्मेल होथबो. सो एमिति देखि कि बाकू ऑब्जर्व करके आमे जानि परिबा जे एटा एसिडिक कि बेसिक. सो जो इंडिकेटर रहला आकू जनरली दि प्रकार कैटेगरी रे आकू भाग कराई छि. द इंडिकेटर इज categorized into two different categories. One is
natural indicator, another one is synthetic indicator, and another one category is there, that is olfactory indicator. Olfactory indicator, what is that? I will tell you that. So let us discuss them one by one. So natural indicator, these are found in nature, they are obtained from natural resources or natural sources. So जोटा आमे प्रकृति रु पाउछे, जनरली प्रकृति कहले आमे गच्छ देहरु जोटा पाउछे ताकू कहूछे आमे नेचुरल इंडिकेटर. सो नेचुरल इंडिकेटर रे प्रथम आसीगला लिटमस. सो लिटमस रो सॉल्यूशन पर्पल कलर रो से गोटे सॉल्यूशन. सो लिटमस टा कोन करे, आई एम राइटिंग लिटमस. व्हाट्स इट कलर इन एसिड सॉल्यूशन or acidic medium and basic medium, both I will write. So litmus is a purple color solution which is obtained from lichen plant. lichen कहले ओडिया रे I think ताकू सईबाळ बोली कहंदी. सो सईबाळ गछ देहरु ताकू एक्सट्रैक्ट करा जाय पर्पल कलर रो से गोटे सॉल्यूशन टे. सो सी एसिड सॉल्यूशन रे रेड कलर इंपार्ट करे. That litmus shows red color in acid solution and blue color in basic solution. Sorry, this is basic, acid and base. Blue color in base. Similarly, some more natural indicators are there, that is turmeric is one more natural indicator. Everybody knows turmeric, that is also found in the kitchen of every home. प्रत्येक घरे घरे ताकू आमे किचन रे पाइबा हळदी. सो हळदी जो रहला turmeric, it is a very good natural indicator to indicate whether it is acidic or basic medium. So in acidic medium, turmeric retains its color. Turmeric has yellow color, so it will impart yellow color, the characteristic yellow color in acidic solution. So in basic solution, turmeric will change into red, or turmeric imparts red color in basic medium, and in acidic medium it retains its yellow color, or you can write no color change. So turmeric, हलदी देख खाद्य जिते बड़े आम खाऊे तरकारी मनकर सार्ट्रे कि कौटी पड़गला ताले ऑब्वियसली सेटा हलदी हलदिया कलर को चेंज हम. तो ताकू जिते बड़े सफा करुचे साबुन लगे कि साबुन होची गोटे डिटर्जेंट होची गोटे बेस्ट. सो ताकू जिते बड़े तादरे रब करा जाए सेते बेलकू से जो येलो कलर होइथिबो सेटा रेड कलर को चेंज हम. यू कैन कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट. समस्ते आपको एक्सपेरिमेंट भी करि पार. नले गोटे कपड़ा नबो, धड़ा कपड़ा नबो, तादरे हलदी किछि तो माने ये करिवो बा हलदी पानी ताकू बुड़ेबो. ऑब्वियसली हलदिया देखा जिवो, ताकू तमे साबुन सफा करबा साबुन ता देहरे स्क्रब कले जानि परिवो से रेड कलर को चेंज हुए. किछि जण तो माने निजे जो माने पेंट शर्ट सफा करछो से माने भी जानि पारथिबो ऑलरेडी जे केमिति तरकारी जदी पडिथिबो साबुन मारले सेटा रेड कलर को चेंज हुए. सो टर्मरिक इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर. नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. Red cabbage. Cabbage means in Odia it is called बंधा कोबी. So बंधा कोबी रो जो एक्सट्रैक्ट तार जो रसटा रेड कैबेज तो माने केबे देखि नथियो, गूगल करी के देख पारो न यूट्यूब रे देखियो. पर्पल कलर से सेटा कैबेज ताको रेड कैबेज बोली कह जाय. सो रेड कैबेज तार जो रसटा थाए ताको जदी आमे एसिड मीडियम रे पकेबा ताले से रेड कलर देखैबो. आ जदि ताको बेसिक मीडियम रे पकेबा ताले से ग्रीन कलर से शो करिवो. सो एमाने हले सम जनरली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. रेड कैबेज हुए तो आम एरिया रे एते अवेलेबल नो, बट लिटमस ऑब्वियसली इट इज अवेलेबल इन लैबोरेटरी अच्छी लिटमस सॉल्यूशन. आ टर्मरिक समस्त घरे अवेलेबल. टर्मरिक को एटलीस्ट नहीं कि आम कर परिबा. सो दिस आर सम natural indicators which show or which impart different colors in acid and basic medium. So the second type of indicator is synthetic indicator.
Second is synthetic indicator. These are synthesized in laboratory or chemical factory. Chemical factory हो कि laboratory एमान को synthesize करा जाए, तैयारी करा जाए, सीट पे एमान को कहा जाए synthetic indicator. आमे दीटा important indicator आमे देखिबा जोटा हला phenolphthalein and methyl orange. Methyl orange ये orange red color रो गोटे solution टे. Next phenolphthalein. Theta synthetic indicator. These are two important synthetic indicator. So methyl orange, it imparts red color in acid solution while it imparts yellow color in basic solution. Basic medium रे methyl orange टा yellow color impact करे आउ acid medium रे red color से देखेबो. Next phenolphthalein. एई जो phenolphthalein इंडिकेटर टा ये पूरा पूरी स्वच्छ पानी भलिया गोटे क्लियर सॉल्यूशन टे phenolphthalein. सो यारो एसिड रे कोनोसी कलर ये शो करबेनी. नो कलर इन एसिड मीडियम. No color in acid medium, whereas it will impart pink color in basic medium. So there are two important synthetic indicators you should remember. The next category is olfactory indicator. Olfactory, third category is olfactory indicator. That is, they will impart smell, different smell. Looking into the smell, you can identify whether it is acidic or they will impart, they will have different smell in acid and basic medium. So there are some olfactory indicators. One is onion extract, पियाज रो जो रस एसिड मीडियम रे तार स्मेल टा रिटेन करिवो से जेमिति पियाज रस रो स्मेल सेमिति तार स्मेल से रिटेन करिवो. सो इट रिटेन्स द स्मेल. बेसिक मीडियम रे जमा स्मेल ही हबनी, नो स्मेल. So onion extract will retain its smell in acid medium and will have no smell in basic medium. Second one is vanilla extract. Vanilla extract, vanilla essence it is called, vanilla essence. Vanilla essence, it also retains the smell in acidic medium and no smell in basic medium. No smell, retains its smell in acid medium and it has no smell in basic medium. A third kind of or third olfactory indicator is clove oil. Clove oil. Clove oil कले होची लवंगर तेल. लवंग तेल जोटा that in acid medium the smell rises. The smell rises in acid medium. लवंग तेलर जो स्मेल अच्छी सेटा अधिक मात्रा रे स्मेल हबो किंतु बेसिक मीडियम रे the smell will go down. The smell will go down. तार जो स्मेल अच्छे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल से स्मेलटा कमी जाए कोठी बेसिक मीडियम रे. सो ये हला इंडिकेटर जो मन को यूज करा जाए एसिडिक आउ बेसिक सब्सटेंस को चिन्हवा पाए. जनरली से मानकर कलर आउ स्मेल को नहीं आमे जानि परबा एसिड मीडियम रे से माने कोन कलर देले कि कोन स्मेल हले, बेसिक मीडियम रे कोन कलर कोन स्मेल हले. सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर टू answer some simple questions.